Hello, dear friends. I am Dr. Sonika Bhatia from Department of Chemistry, Isabella Thoburn College, and I will be now talking about ORD, that is optical rotatory dispersion, CD, that is circular dichorism, Cotton effect, and Octant rule. This is a difficult topic. Will take around 8 to 10 videos. This is the first one which I am considering today. We all know that light is an electromagnetic radiation. That means it has two components. One is an electrical component and one is a magnetic component. The electrical component and the magnetic component are at right angle to each other. In blue line, you can see the electrical component, and in green line, you can see the magnetic component. But today we will be talking about optical properties, and optical properties are dependent only on the electrical component. So we will neglect the magnetic component and only take into consideration the electrical component. Okay, you have all studied plane polarized light in BSc. And we say that a plane polarized light is one which has its vibrations occurring in a single plane. We know that when a light source, a light source consists of several beams of light vibrating in all possible directions. You can see the light source here. It has beams of light in all possible directions. Now, when this light source is from the light source, a ray of light is thrown on the polarizer. Then what happens? Only that light passes through the polarizer which is parallel to it, and thus we have a plane polarized light in which the vibrations are occurring in a single plane. This is known as the polarizer. It is made up of a nickel prism, and then we have an analyzer here. A substance, we've already studied about optical rotation, so I will not take it up in very much detail. We all know that a substance which rotates the plane polarized light in the clockwise direction is referred as dextrorotatory, and a substance which rotates the light in an anti-clockwise direction is referred as levorotatory. And alpha is the angle of rotation. This alpha is the angle of rotation. Alpha divided by the concentration and by the length will give us specific rotation, which is put in a bracket. The concentration is always taken in grams per cc, and the length of the tube is always taken in decimeters. Here, if you look at the specific concentration, here I have made the symbol. On top there is T written. This T represents the temperature at which the particular experiment has been done. Like if it is written 25 degrees, that means the measurements have been done at 25 degrees centigrade. And here we have lambda written, which refers the wavelength of the light which have been used. You can see the concentration, again I am telling you, is in grams per ml, and the length of the tube is always taken in decimeters. Now let us see the types of polarized light. A plane polarized light is said to be made up of two circularly polarized light. One is a right circularly polarized light which rotates in a clockwise manner, and the other light is a left circularly polarized light which rotates in an anti-clockwise manner. In fact, when a plane polarized light is made to pass through a freshly cut glass prism known as the Fresnel's rhomb, then it gets resolved into the right circularly polarized light and the left circularly polarized light. And when these circularly polarized lights are passed through an isotropic medium, then you will get a plane polarized light. Now we will have to understand what is an isotropic, and the other kind of material is an anisotropic material. We will do it in next few slides. Let us look at this particular diagram. Here if you see, this is plane of polarization of a plane polarized light, and I can say a plane polarized light is made up of two lights. One was the
right circularly polarized light and the other was the left circularly polarized light. These are the electrical components. One which rotates in the clockwise direction is the right circularly polarized light depicted by ER, and the one which rotates in the anti-clockwise direction is depicted by EL. Here at this juncture, both the vectors are in one direction, so you can see the vectorial addition. It is also in one direction. In the next case, the electrical vector ER has rotated a bit and EL has also rotated by the same amount in the anti-clockwise manner, and thus the vectorial additions of these two has decreased. You can see here it was so big and here it has decreased. Now this particular point is represented here in the waveform by this line. If you see the center line, and now here what we can see, the resolution, it has come at this point. In the next diagram, if you see, ER is in one direction and absolutely opposite is EL. As it is vectorial addition, we can see vectorial addition is 0, and thus we come to the node of this particular wave. In the next case, if you see, now ER is rotating uh, and EL is also rotating, and thus if you see this, the vectorial addition is in the other direction now, and so this is where we represent it. In the next case, if you see, now what has happened, now both of them have gone to the extreme opposite side. So here the vectorial addition is maximum. This is this point of the wave, and this particular diagram represents this point of the wave. So you can see that this particular wave is a linearly polarized wave, and it is composed of an electrical component which is the right circularly polarized light and another one left circularly polarized light. Hope you have been able to understand this. Now let us look at what are isotropic and anisotropic materials. When the properties of a material vary with different crystallographic orientations, the material is said to be anisotropic. सिंपल सा मतलब है कि ये मटेरियल ऐसा है, अगर इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं तो डिफरेंट डायरेक्शंस में उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. मतलब मॉलिक्यूल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होगा, तब इस पर्टिकुलर मटेरियल को हम कहेंगे एनिसोट्रोपिक मटेरियल. इसीलिए मैं कह रही हूँ दे आर द मेजरमेंट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट, एंड एग्जाम्पल ऑफ सच मटेरियल्स वुड बी वुड. वुड अगर आप देखें कॉम्पोजिट मटेरियल है तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे. Similarly, chiral compounds, we know the chiral compounds are not same, they are molecularly disymmetric or asymmetric. इसलिए अगर उसके थ्रू लाइट पास करेगी तो उसकी स्पीड में डिफरेंस आ जाएगा. ऐसे सब्सटेंसेस को एनिसोट्रोपिक कहते हैं. और ऐसे सब्सटेंसेस जो सेम थ्रू आउट है, मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन सेम थ्रू आउट है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम आइसोट्रोपिक सब्सटेंसेस कहते हैं. सो व्हाइल when the properties of a material are same in all directions, the material is said to be isotropic, that is direction independent. Okay. Now let us look at what is circularly birefringent. An optically active substance is said to be circularly birefringent, that is, if it has unequal refractive indices for the left and the right circularly polarized light. अब इसको समझें क्या कहना चाह रहे हैं हम. सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. In refractive index represented by small n is equal to C upon V, where C is the velocity of light in vacuum and V is the velocity of light in a particular medium. So इस रेशियो को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसका मतलब मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो सकता है. मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है जब वेलोसिटी लाइट की बराबर हो जाए, वेलोसिटी लाइट की जो वैक्यूम है वही बराबर हो जाए वेलोसिटी ऑफ लाइट किसी मीडियम में, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा. दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी 1. और जितना रेयरिफाइड मीडियम होगा उतना
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। जितना डेंस होगा, जिसमें जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। हमने ये बात करी थी कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एनिसोट्रोपिक होते हैं। ऑब्वियसली इसका मतलब जब लाइट उसके थ्रू पास करेगी, तो लाइट के जो प्लेन पोलराइज लाइट उसके थ्रू पास करेगी, तो प्लेन पोलराइज लाइट दो चीजों की बनी हुई है। एक है लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट और एक है राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट। लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट के रास्ते में जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, उतने मॉलिक्यूल्स राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट के रास्ते में शायद नहीं आए या उससे ज्यादा आए, मतलब डिफरेंट आएंगे, बिकॉज मटेरियल एनिसोट्रोपिक है। इसलिए लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट और राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट की स्पीड में अंतर आ जाएगा। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट और राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट की स्पीड में फर्क आ जाए, उनको हम कहते हैं सर्कुलरली बायरिफ्रिंजेंट्स। और ये स्पीड में फर्क क्यों आ रहा है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट एंड राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट के लिए डिफरेंट है। NL इज नॉट इक्वल टू NR। ये ध्यान में रखें, इस स्लाइड में लिखा है NL इज इक्वल टू NR, बट इट शुड बी NL इज नॉट इक्वल टू NR। Now let us look at effect of light. जब किसी भी मटेरियल पे या मॉलिक्यूल पे लाइट पड़ती है, तो क्या फर्क पड़ता है वो देख रहे हैं हम। When a light beam enters through a medium, two observations can be seen as a result of the interaction between the electromagnetic field and the valence electrons of the medium. मीडियम में इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम लाइट फेंक रहे हैं, विच इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो उन दोनों के इंटरैक्शन से दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि हमारा कंपाउंड एनिसोट्रोपिक है, और अगर एनिसोट्रोपिक है तो उसका लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट एंड राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। So due to different refractive indices, the velocity of the left circularly polarized light and right circularly polarized light become different or unequal. और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि अगर हमारे मॉलिक्यूल में कोई क्रोमोफोरिक ग्रुप है, मतलब अब्जॉर्प्शन यूवी रेज को अब्जॉर्ब करने वाला कोई ग्रुप प्रेजेंट है, तो जो हमारी इंसिडेंट लाइट होगी वो ज्यादा होगी और जो हमारी इमर्जेंट लाइट होगी वो कम होगी, क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल जो है वो लाइट अब्सॉर्ब कर लेगा। तो जब हम लाइट किसी मॉलिक्यूल पे डालेंगे तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि LCP RCP की जो वेलोसिटी है वो फर्क हो जाए। दूसरी चीज है इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे भी फर्क हो जाएंगी। इंसिडेंट ज्यादा होगी, इमर्जेंट कम होगी, क्योंकि आपका कंपाउंड कुछ अमाउंट ऑफ लाइट अब्सॉर्ब कर लेगा। आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि CD क्या है और ORD क्या है। थैंक यू फॉर द डे।